India Libya, the only channel you can trust. The Indian community in Libya is highly grateful to the distinguished officials from the Ministry of External Affairs, Government of India, for having given them a chance to listen to them patiently. The Indian nationals are also curious to know about the interaction event that was held on 6th August 2023 at India House in Tripoli. It should be known to all that the interaction event with the high-ranking Indian officials was a great success. The historic gathering provided an opportunity to the Indian nationals to express themselves and let their voice be heard by the authority. The interaction event is the first of its kind in recent history. The Indian community welcomed the esteemed Indian officials with a bouquet of flowers. They were really very excited to receive them with honor and respect. It was a moment of great pride for all the Indian immigrants in Libya. Here is the snippet of welcome video. Thank you. Thereafter, the welcome speech was followed by the distinguished guest. Good evening, namaskar to all of you. मैं अगर हिंदी में बात करूँ तो चलेगा? बढ़िया सर, चलेगा। ख्याल से हिंदी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा लगेगा। Respected Ambassador Sri N.J. Gaungte sir, my colleagues from the ministries from New Delhi, और आप सभी लोग, मुझे यहाँ आकर के और हम सब डेलीगेशन को भारत सरकार की तरफ से यहाँ आके बहुत खुशी है और आप सभी को देख के प्रसन्नता है। आप सभी ने समय निकाला आज के दिन आने के लिए। मैं काफ़ी समय से हम लोग The stage was soon set for cordial interaction with the Indian community. The Indian nationals were given a chance to express their points of views. The distinguished guest listened to each of them very patiently, very attentively. Here is one of the Indian nationals who has been working in Libya for 25 years. By the grace of God, today we have an honor of hosting all dignitaries and hope something concrete will come out soon. Being in Libya for last 25 years, I wish to say Libya is the best country for any Indian to work for their livelihood for years compared to any other Gulf countries. I am very sure that so far in history, no Indians left Libya employment for any lack in working environment or discrimination or humiliation from Libyan side. And any Indian who chooses to work here in Libya leaves only after retirement. Such a wonderful, peaceful, dignified working ambience has been provided in Libya for legal employees. I say legal employees. The respect and regard that Libyans have for Indians is incredible. Till date, we have not faced any racism or any provocative local violence in our workplace, nor any delay in salary remittance for decades except some unorganized sectors. Herewith, on behalf of all Indian expats, I humbly appeal Indian Mission to reconsider this travel ban and at least to start with relaxation for existing employees. I once again thank you all and extend my warm wishes and welcome you in this great evening. Thank you, sir. The interaction event lasted for quite a long time with full participation of Indian nationals with dignitaries. It is hoped that something best and positive comes out of this grand interaction. Thank you. An Indian national known as Little Flower wanted to know more about the community event that was held in Tripoli as well as in Benghazi on 6th and 8th of August 2023 respectively. Unfortunately, there were hundreds of Indian immigrants in Libya who could not get to the events due to personal reasons, either lack of time or a long drive to the venue. But as concerned citizens of India, they wish to know more about
the valuable talk discussed during the interaction event at India House in Tripoli. So here is an audio clip of the historic moment. The welcome note of the distinguished guest from the Ministry of External Affairs of India sheds light on India's neutrality in the internal affairs of Libya. मेरे अपने कई टीचर्स मैं जानता हूँ जो लिबिया में रह के आए और यहाँ की बड़ी अच्छी बातें हैं और बड़ा अच्छा वर्णन करते रहे हैं। तो अब क्योंकि यहाँ के हालात जैसे भी रहे हो, हम लोग यहाँ के राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ते हैं और नहीं हमें इनसे कोई ऐसा सरोकार है। India is committed to safeguard the interests of the Indian nationals in Libya. हमारा भारत सरकार की तरफ से मुख्य सरोकार जो है हमारा यहाँ के भारतीय समुदाय है और भारत सरकार ने अपने प्रयासों से कम 2 बार में बड़ी मात्रा में लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके पुनः भारत भेजा था। आखिरी बार 2014 में किया था। The Honorable Speaker also talked about the employment opportunities for Indian nationals in Libya. उसके बाद भी मुझे लगता है कहीं न कहीं आप लोग यहाँ बेटर इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आज भी यहाँ पे हैं और देश में भी बहुत सारी कंपनीज का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आने का मन है, वो मानस बना रहे हैं, यहाँ पे फिर से वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। India has a respectable image in this North African country. और क्योंकि हम राजनीतिक रूप से यहाँ नहीं एक्टिव है तो हमारा भारत की एक बहुत अच्छी गुडविल है, रिस्पेक्ट है यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के लोगों के बीच में। तो हम 2019 तक अपने एम्बेसी को भी, दूतावास को भी यहाँ पे रखे हुए थे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंटिंजेंट भी लगा हुआ था। The distinguished guest pointed out the circumstances that led to the closure of Indian embassy in Tripoli in 2019. पर जब हालात बहुत बिगड़ गए यहाँ पे, जब त्रिपोली पे अटैक होने लगे और देश में पुनः वैसी स्थितियां पैदा होने लगी तो कहीं न कहीं ये महसूस किया गया कि सिक्योरिटी कंटिंजेंट को भी निकाला जाए, एम्बेसी को पूरी तरह से बंद किया गया था उस समय। उसके बाद पैंडेमिक का दौर आ गया तो 2-3 साल उसमें समय निकल गया। India has been waiting for political stability in Libya. और फिर हम बार-बार ये स्थिति का जायजा ले रहे थे कि कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं ये मन में था कि यहाँ इलेक्शन होंगे, यहाँ कोई गवर्नमेंट बनेगी या इस तरह का कोई ना कोई एक स्थिरता की तरफ हम सोच रहे थे। तो जो भी खैर बहरहाल यहाँ चल रहा है। At the end, objectives of visit to Libya were expressed in terms of assessing the situation on the ground. भारत सरकार की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे स्थिति का जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं, आप सभी से मिलने के लिए आए हैं। आप सब you are in difficult situation here और there is no quick solution to the problems faced by the Indian community in Libya. देखिए ऐसा कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पूरे रीजन में, निजर में और घटनाएं होने के बाद में यहाँ इलीगल माइग्रेशन की बहुत समस्या है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हमारे पास बहुत क्विक सॉल्यूशन है कि ये ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। However, India is committed to listen to the grievances of its citizens working in Libya. लेकिन निश्चित तौर पे हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी बातों को और समझना चाहेंगे कि वाकई समस्या क्या है, वाकई हम क्या कर सकते हैं रियलिस्टिकली जिससे हम कुछ मदद पहुंचा सकें, कुछ आपकी सहायता कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये डेलीगेशन, हम सभी लोग आए हैं, एम्बेसडर साहब ट्यूनिस से आए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर तरीके से आपको समझ सकें, आपकी बातों को और गहराई में जा सकें। तो एक एक करके आप सभी अपना थोड़ा थोड़ा करके अपनी बात को कहें और फिर हम और चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। India is undoubtedly committed to protect the interest of its nationals. पर निश्चित तौर पे भारत सरकार अपने भारतीय समुदाय के लिए संवेदनशील है। भारत सरकार का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हमारे लोग जहाँ भी रहे उनको पूरी सहायता मिले और जितना संभव हो सके। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जब India took challenge to help its nationals out of Sudan in the ongoing conflict. सूडान में अभी जो घटनाक्रम हुआ वो भी मैं ही वाना डिवीजन में डील करते हैं और आप देखिए कि 3 हफ्ते में हमने अपने पूरे 4000 से ज्यादा लोगों को और कई विदेशी नागरिकों को भी वहां से ऑपरेशन कावेरी के तहत उनको सुरक्षित निकाल अपने देश में पहुंचाया। तो
प्रयास हमारी ओर से पूरा रहता है, बस वहाँ की परिस्थितियां वो भी देखना होता है कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ के राजनीतिक माहौल कैसा है, वहाँ का घटनाक्रम कैसा है। तो यही सब समझते हुए हम लोग इसी प्रयास की एक कड़ी है। The respectable guest cautioned the Indian community not to highlight the event in media in an unrealistic manner. मेरा एक अनुरोध है कि आप कम से कम इसके बारे में मीडिया में जाएं, कम से कम इसको पब्लिक डोमेन में डालें, क्योंकि ये हम यहाँ पे कोई घोषणा करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे स्थिति का जायजा लेना, स्थिति को समझना और उसके बाद निर्णय लेना है। तो मेरा एक अनुरोध है कि जितना हो सके आप कम से कम इसको पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, बैक होम अपने यहाँ कम से कम करें, ताकि इससे हमें सहायता मिलेगी, इससे आप सभी को भी सहायता मिलेगी और हम अच्छे से समझ के और मिलजुल के कुछ ऐसा करें कि सभी के लिए ये उचित रहेगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। कहीं कोई समझने में तो समस्या नहीं? यू हैड अ प्रॉब्लम? ऑल ओके? वेरी क्लियर? ओके, गुड। So please, one by one, you can also now join us. Thank you. Thank you, India, for taking pain to visit us from far off and listen to our problems. Jai Hind. Long live India. Thank you. तो एटलीस्ट लोगों को परमिशन होनी चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी से जा रहे हो और आपके साथ कुछ भी गलत होगा, भगवान न करे, तो आपकी जिम्मेदारी है, यू नो। और अगर आप इतना तो समझ सकते हो कि 2005 से मैं यहाँ पे हूँ और अभी भी मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड को आना है, ही कैन नॉट कम बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग बैक, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसके लिए आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। We have heard a lot about Libya from other sources, but we have never heard about Libya from the perspective of an Indian staying and working in Libya. Here is how an Indian national working in Libya reacts to the situation on the ground in this North African country. Sir, Joint Secretary Sir and other dignitaries of Ministry of External Affairs. The crowd here is a classic example. If you have any iota of doubt about the security and safety of Indian citizens here in this country. The biggest part I love, many of my friends and colleagues and relatives, including my mom, keep always asking me why hell you are taking so much of pains traveling all the way to Africa, that to a particular country like Libya. When I am a postgraduate engineer and my wife is a postgraduate doctor, but I keep saying only one thing. Perhaps this is one of the safest countries I ever heard and seen. It's not exaggeration, it is my perception, and perception comes from the experience, gentlemen and ladies. And you know one more important thing I love, the respect and the dignity they give it to Indian community. Personally, have you ever seen a person of a ministerial cadre gets up and greets you if you are a small contractor or outsourcing company owner? I have experienced this. I have been experiencing every day, every time when I meet people like production directors, chairman of the company. We operate in steel plant in Misurata. I represent a company called First Global Engineering Services. We have about 250 people. I have requested, and I still request you, Shuklaji, if you can make a short visit to Misurata tomorrow if the time permits. We love to you have to be there. You can see 500, 600 people, one of the most lively environment in Misurata city and the steel plant and the camp. We have shared some of the video clippings. I request Honorable Joint Secretary Sir and other dignitaries to consider. We have been losing opportunities for last 7 years and we are still losing. Today the potential is multiplying in Libya. And I believe, I'm sure you must be aware of, you must be updating, a lot of European embassies started operating now. We hear so. And we have been requesting for lifting the ban. But till then, I sincerely request you to find a mechanism. I am sure there are multiple mechanisms are available where other embassies are using and operating. And you personally, I remember you have been working in the field in Iraq a while ago.
and you are aware all the multiple choices available to address this issue. Kindly give a serious thought and efforts to either remove the ban or find mechanism where existing employees in different fields, organized sectors operating in Libya should be having safe and dignified travel. You all have really hardships. Thank you very much for your time, sir. Jai Hind. Thank you. Been in Libya for the past 17 years. I would like to say something about Libya. Libya is like my second hometown because I've been here for so long, and I don't speak Hindi much, so I'm sorry about that. Anyways, I'm studying at the Tripoli University for Doctor of Veterinary Medicine. I'm fourth year now. And to be honest, I don't even have a bachelor degree yet, but I'm making my own money by working and managing events. And the Libyan people have been so respectful, and they're very, they have so much hospitality. I've actually never seen a place where they treat everyone as an equal. And every time I want to travel, I have to rethink twice or three times because I'll be risking my future by traveling to India and they won't let us go back. I'm here with my mom and my dad. They work here in the university hospital. And so, yeah, we request you to lift the ban so we can travel safely. Thank you. Good evening. मैं यहाँ पर लीबिया में around 40 years I'm staying here in Libya. मुझे 40 साल हो गए. I'm owner of Indian restaurant. At the moment I have 5 Indian restaurant in Tripoli and Misrata. 2 of them I'm operating. मैं 2 restaurant Tripoli में चला रहा हूँ और मेरी 3 restaurant बंद है. उसका reason है I don't have employees. In 2009 when I took my wife she's a Libyan. When I took her to Dubai, Singapore, Malaysia, she loved the Indian food. And she suggested to me that why don't you open an Indian restaurant? मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि what she's saying. At least for a year she was insisting me to open an Indian restaurant. तो मैंने थोड़ी हिम्मत की. मुझे कुछ knowledge नहीं. मैंने अपनी जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाया है. I don't know how to make. I am sure that nobody will believe this, but I swear to God, I don't know how to make a cup of tea. I started my business in 2009. My first restaurant is in Shara Baladia. Excellency knows about it. Then I went to the second one in Gargarish, the third one in Nufleen, and now I got the 4th one from the local authorities. In Misrata, the 5th one. It's completely ready, but I cannot operate because I don't have employees. I have around 35 employees working with me. I'm responsible for their accommodation, for their salary, and they're very happy, they're very satisfied. मैं चाहता हूँ कि Indian restaurant in all Libya, I make 50 restaurants. पहले लोगों को इंडियन खाने के बारे में पता ही नहीं था लीबियनों को. I'm very happy today. The Libyans are very happy with the Indian food. It's a nice place. I've spent my 40 years of my life in Libya. Libyans are very good people. They're very humble. अगर आप कभी भी गल्फ कंट्री में जाओगे, आपको एक शेख, ये मैंने सुना है कि आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा. लेकिन Libyans are so simple, so nice people. In my 40 years, I never had any problem with the Libyans. ये जो लोग बैठे हैं मेरे सामने, everybody is a witness of this. India Libya, the only channel you can trust.